Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Integrated Development Environment IDE. This is the environment which is used to create, compile and run computer program. C++ के लिए डेव C++ कंपाइलर इस्तेमाल होता है या IDE इस्तेमाल होता है. टर्बो है. ये और भी नए नए जो आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आए हैं जिसको इस्तेमाल करके प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं, कंपाइल किए जाते हैं, रन किए जाते हैं. व्हाट इज मीन बाय क्रिएटिंग मीन राइटिंग द प्रोग्राम. Compiling mean the program will be converted into 0 1 into machine language so computer can understand, can execute, can run. IDE is a computer software that brings all the processes and tools required for program development into one environment. एक ही environment में सारी चीज़ें जो है integrate होती है. Integrate mean combine. Today's modern IDE have user-friendly. User-friendly mean we can easily use these IDEs. C++ language also use IDE. Most commonly use IDE are Dev C++ and Visual Studio Code. These are very user friendly because it contains graphical user interface. Throughout this book, Dev C++ will be used. Dev C++ is a full-featured integrated development environment for the C++ programming language. As similar IDEs, it offers to the programmer a simple and unified tool. बहुत simple है और unified tool है जिसकी वजह से easily प्रोग्राम लिखा जाता है. प्रोग्राम में एरर्स फाइंड किए जाते हैं. प्रोग्राम को कंपाइल इजीली किया जाता है. As similar IDEs, it offers to the programmer a simple and unified tool to edit कर सकते हैं, लिख सकते हैं, compile, link and debug program. Debug mean to remove errors. It also provides support for the management of the files of a program and projects containing all the elements required to produce a final executable program. तो एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के लिए तमाम जो मेन्यूज़ हैं, जो आइकन्स हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स हैं, टूल की मदद से वो तमाम प्रोवाइड होते हैं. तो ये था आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.